find out the acceleration. Acceleration का formula क्या होता है? Change of velocity over time. At t equals to 0, a car accelerates uniformly in a straight line from rest, which means initial velocity is 0. And after 3.2 seconds, it has 13 meters per second, 13.0 meter per second. So final minus initial divided by time. This will give us the acceleration of the object. Oh, Answer? 4.06. 06. So round off करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.1. Because two significant figures तक हमारे पास time है. What is meant by acceleration? We just gave the answer that rate of change of velocity is acceleration. Then उन्होंने बोला the car travels at 13 meter per second from 3.2 to 12.0. Plot the speed time graph from 0 to वो. So उसकी speed कितना था? 13.2. This would be somewhere here. 13.2 की speed यहाँ पे होगी. And it reached to this value at 3.2 seconds. So this would be somehow the value. So 0 से अब मैं जो straight line कैसे draw करूं? Let me get a line. तो यहाँ से 13.2, okay, and then उसने बोला है the car travel at this speed for 12 सेकेंड. तो यहाँ तक ऐसे ग्राफ बन जाएगा मेरे पास. ठीक है. Okay. देन उसने बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बिकॉज वी कुड सी The कि एक area ट्रायंगल under फॉर्म the हो रहा है. 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस हमारे पास कितनी थी? 3.2. एंड हाइट हमारे पास कितना था? 13. 18. मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. 20.8. तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 21. 21. Then we have the car decelerates from 13 meter per second to 0 at a constant deceleration. The mass of the car is 13. The car travels 13 meter in 2 seconds as it decelerates. Show the work done by the car as it decelerates approximately 1.1. What is the formula for work done? We know that work done is Force equals to force over. into distance. We have distance. Force is equals to क्या होता है? ma. We have mass, which is 1350. For acceleration, we have velocity and time. 13 divided by 2. From there, we'll get force. How are you doing this so fast? सारा कुछ सामने तो है. Is it too fast for you? Except for F. Wait, what's the distance again? 13. नहीं 13 अभी वहां पे भी नहीं गया. अभी मैं सिर्फ F कैलकुलेट कर रहा हूँ. F equals to ma वाले फॉर्मूला से. Oh, 8775. 8775. Now we'll put this here. 8775 times distance, which is 13. See if we're getting this answer. Yeah, 1,140,075. Round off होके तो 10 raised to power 5 चार्ज हो जाएगा. Yeah. Then उसने बोला on another day the car travels a longer distance while it decelerates from 13 to 0, which means उसका stopping distance क्या है? Stopping? More or less? What do you mean by stopping distance? लिखा हुआ है बच्चा सामने. Explain what causes the stopping distance to increase.
मतलब उसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने से लेके गाड़ी के स्टॉप होने तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। Hmm. ठीक है। एंड ही इज आस्किंग कि व्हाई द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज मोर ऑन अ सर्टेन डे। So if the stopping distance is getting Friction is large, this might be due to the friction. So if the stopping distance is bigger, that means friction क्या होगी automatically? Less greater. होगी। Less. What? Why? Cause फिर slippery होगा ना। Yeah. So So doesn't that for mean there'll be more friction? there would be low friction due to wet surface or anything like that, due to which there is less friction. Friction ज्यादा होती है तो object immediately stop करता है ना। अगर फ्रिक्शन लेस होगी द ऑब्जेक्ट वुड टेक ग्रेटर टाइम फॉर ग्रेटर टाइम टू स्टॉप। Hmm. ठीक है। Okay. सो इट माइट बी ड्यू टू द फ्रिक्शन। Friction. और फिर हम उसकी रीजनिंग उसके अकॉर्डिंगली मतलब वी हैव जस्ट डिस्कस द रीजनिंग एज वेल। देन वी हैव दिस tumbler. State the process by which the hot air removes water from the wet cloth. तो उसको क्या नाम देते हैं evaporation का। Evaporate. Then we have the air is cooled as it passes through the condenser. Describe and explain one other way in which the air leaving the condenser is different from the air entering the condenser. So before It entering has the more kinetic energy. sorry, The air leaving has like more kinetic energy. or we could say that the air leaving the dryer is more leaving the condenser is more drier than that one entering. उसके water vapor remove हो जाएंगे। Hmm. Okay. Then we have the drum of the tumbler dry rotates, lifting up the wet cloth, which then falls down through the hot air. Name the force that Gravity. causes the clothes to fall down. That is gravity or weight. State that when the drum rotates too fast, the cloth remains in contact with the wall of the drum. State the direction of the resultant force on the cloth during the circular motion. जब भी circular motion पे होती है force हमेशा क्या होती है perpendicular to the motion होता है cause when there is a circular motion हमने movements में पढ़ा हुआ है कि when there is a circular motion force is always perpendicular to the motion of the object. So we'll write Hmm. perpendicular force. Then we have suggest why using a clothesline. इससे क्लियरली क्या होगा हमारे पास एनर्जी जो वेस्टेज है वो लेस होगी कॉज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। और evaporation इज अ नेचुरल प्रोसेस सन ड्राइड जो होगा उससे हमारे पास कोई एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं आएगा उसकी वजह से बिल्कुल भी। Hmm. Okay. देन वी हैव व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इम्पल्स। तो हमने इम्पल्स को कैसे रीड किया था। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, or we can also say that the force that acts for a very short interval of time is known as impulse. Okay. Then they have asked to calculate the resultant impulse on the balloon. For that, let's recall the momentum topic. Momentum का जनरल फॉर्मूला क्या होता है m into v। We also know that के average force किसके equal होती है mv minus mu over t के। How did we get this formula? हमने डिस्कस किया था F is equals to ma and a is equals to v minus u over t के इक्वल होता है। Putting this in place of a, we'll get mv minus mu over t. This F is known as average force, and this average force is equals to rate of change of momentum, because this is change of momentum and this is Hmm. divided by time. So rate of change of momentum.
So let's see what data do we have. We have, we need to go up as well to see, okay, do we have any data? Okay. We know that K impulse is equals to force into time and we have given the mass of the object. तो mass किसके equal होता है? Force किसके equal होती है? ma के. F is equals to W is equals to mg का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. एंड m is given as 15 grams जो kilograms में किसके equal हो जाएगा? 0.015 के टाइम्स 10. वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. और टाइम उससे हमें कितना दिया हुआ है? 0.6 सेकेंड्स, 6-7 सेकेंड. ये आ गया एफ एंड द No, टाइम इज, 0.67 is the distance. टाइम फिर क्या दिया हुआ? 0.18. सॉरी 0.1. हाँ 0.18. और हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी. अब वी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है. सो वी वुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस विच इज 0.67 ओवर टाइम विच इज 0.18. इसका क्या आंसर आएगा? 3.72. तो वी की वैल्यू आ गई 3.72 और मास इज 0.015. आई थिंक सो दिस इज मोर बेटर. ये ऑथेंटिक नहीं, वैसे इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है? 0.015 टाइम्स 10 टाइम्स 0.18. 0.027. ये बेसिकली ये जो है ये वेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये वेट तो नहीं होता, ये फोर्स होता है. दैट्स व्हाई ये ठीक नहीं होगा. दिस इज मोर करेक्ट बिकॉज दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. ओके. So you, हाँ, it's kind of confusing. हमने अभी डिस्कस किया है ना कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम होता है. अगर फोर्स इनटू टाइम कर दें तो वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. मोमेंटम की वैल्यू की, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? m इंटू वी के. मास इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हमने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके. Okay. बल्कि आई रिमेम्बर कि वन ऑफ द स्टूडेंट डिड दिस प्रोसेस एंड आई रिकॉल इट कि मैंने इसको क्रॉस इसलिए किया था बिकॉज दिस इज द वेट नॉट द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट. बिकॉज Okay. इम्पल्स में जो फोर्स होती है दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ कांटेक्ट. Content? मतलब द फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो बेसिकली वो कांटेक्ट टाइम के ऊपर ही होती है ना. Uh, ये जो एफ होता है ना इम्पल्स का, एफ क्रॉस टी में जो एफ होता है दैट इज द एफ दैट appears when the two bodies come in contact with each other. जैसे when the ball hits the bat, yeah. that force would be the impulse. Okay. Then we have explain how momentum is conserved as the balloon accelerates. तो हमें conservation of momentum की बात करनी है. तो एयर जो है वो बैकवर्ड रिलीज हो रही है एंड बलून जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है. सो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बैकवर्ड एयर रिलीज. आपस में क्या होंगे? जितना बैक एंड से रिलीज होगा एयर उतना ही फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होगा. सो इन दैट वे एम वी वुड रिमेन कंजर्व. Okay. Because the speed of air exiting the balloon होगा that would be the reason of the acceleration getting by the balloon ना. तो दोनों speeds आपस में क्या होंगी? Equal होंगी. So the momentum would also be same.
that comes the vector question. अब whenever we are dealing with vectors, हमारे पास vector diagram है. You उसके just connect the line, measure हाँ, it, and then head to convert tail it to rule the के accordingly. Head to tail rule के accordingly. If I need to mm, add these two lines, first of all, I need to make a scale through which I can get these values bigger. तो कोई भी ऐसा scale हम लोग choose कर लेंगे because it's hard to draw such small lines. So if we divide 0.4 with 0.2, what is the answer? 0.2. I mean, You 2. put, हाँ, 2. और अगर आप इसको डिवाइड करें 0.10 से तो आई गेस 40 आ You can जाएगा, ju- 4 आ you जाएगा. can just say 0.1 is equal to 1 centimeter. मतलब 0.1 से डिवाइड करें तो 4 आ रहा है ना. Hmm. तो 0.1 Yeah. न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 0.40 is equals to 4 centimeter, 4. and 0.74 centimeter Newton is equals to 7.4 centimeter. Hmm. So this line would be of 7.4 centimeter. This line would be of 4, which I will redraw here according to head to tail rules. And then I will draw the resultant like this: head to head and tail to tail. Uh, okay. And the another method is y-axis square plus x-axis square. This would give us, देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली. 0.84. When you'll get this paper printed तो फिर कैलकुलेट भी कर लेना, आपका यही आंसर आएगा उसमें भी. ठीक है. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर मैग्नीट्यूड वी डू x square plus y square, and for direction we do tangent theta is equals to y over x. So what is the y here? 0.74, and x is 0.40. So theta is equals to tangent inverse 0.74 divided by 0.40. What is the angle? Wait. 61.6. Which is approximately equals to 62. Did you get this question? Yeah. But then, like, how do you know which one is X and Y? जो x के along होगा वो x ही होगा ना बच्चा. Coordinate 0, system x and y. 0.74 is X? y 0.74 x के along बन रहा है या y के along बन रहा है? But it depends on the way you look at it. Like, it can be X or बेटा Y. नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वर्टिकल लाइन y होती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन x होती है. Yeah. And 0.74 is horizontal. How come it's horizontal? Why are you even tilting the page? Oh, wait, no. Then we have the temperature of the bottle and its content are increased. Explain in terms of the particle how the pressure inside of the bottle. Obviously, if the temperature is increased, तो kinetic energy of the particle भी क्या होगा? Increase होगा, Increase. due to which the collisions will also increase, and in turn हमारे पास जो है pressure भी क्या होगा? Increase होगा. Increase. Then उसने next part में बोला हुआ है the lid is removed from the bottle. State and explain how the air pressure inside the bottle changes. When the lid is open, तो particles with a greater kinetic energy would leave the bottle. तो अच्छा लिड वाला पार्ट हो गया था. अब उसने हमें क्या बोला हुआ है? थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, विच इज
Q or E is equals to MC delta theta. M is 0.18, C is 4200, and temperature difference is 20 degrees C. Now let's see कि 20 degrees C is the only temperature given और उन्होंने ऊपर भी कोई वैल्यू दी हुई है temperature. No, they have not given us any other value of temperature. That means कि ये temperature difference होगा हमारे पास. ठीक है? 15,000. So 0.18 times 4200 times 20 would give us 15,120. which would be rounded off to 15,100. yes or 1.5 into 10 raised to power 4. This would be most accurate answer because we have two significant figures. Hmm. Then उन्होंने pressure difference calculate करने को बोला है. We know that pressure is equals to density into gravity into height होता है. We have density, we have gravity, which has a fixed value, and we have height, which is 40 centimeter. But before using this value, we'll convert it into um Meter. Meter meters. cube. Meter cube नहीं. Oh. 1 into 10 raised to power 3 times g, which is 10 times 40 into 10 raised to power minus 2. So we'll get the pressure. 4,000 अच्छा एक चीज Newton. जल्दी से देख लेते हैं उन्होंने जी की वैल्यू यूज कौन सी करने को बोली है. नॉर्मली पेज के स्टार्ट में गिवन होता है वो. Hmm. They have asked us to use the value of 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो जी की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे. 3,920. 3000. 920. तो ये राउंडेड ऑफ होके वैसे भी 4000 ही बन जाएगा. Then we have the light question. Oh, Figure on a moving car and a stationary truck. The road has a high wall of on each side. Driver of the truck is at the position X. The car moves around the corner. On figure, label a point Y on the road where the truck driver first sees the car. at the curve. So this would be the point जहाँ पे वो first time उसको देखेगा. Hmm. Then उसने हमें क्या बोला हुआ है? But can it be a bit further down from there? Like the point? Here. No, like more down, like बट at वो the. जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है तो वो हमेशा आउटर कर्व में जाता है, कभी भी इनर कर्व में नहीं मूव करता वो. Hmm. Okay. तो इस वजह से आउटर कर्व में मैंने रखा है उसको. Oh, and they said high walls. So yeah. Yeah. Centripetal force would push the car to the outer curve, na? Not the inner Mm-hmm. one. There is a possibility of hitting the wall. Then उसने इमेज फॉर्म करने को बोला है तो इमेज क्लियरली हमारे पास यहाँ से लाइट की रे जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा एंड इट वुड बेंड टूवर्ड्स द पर्सन. मतलब थोड़ा सा मेरा हार्ट शेक कर गया, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स उसको ड्रॉ करना. Where would the image be for? हेयर. Oh, ऑब्वियसली उसको फिर आप ट्रेस बैक करोगे, ये डिस्टेंस एंड वो yeah. डिस्टेंस इक्वल होगा, बट उसने बेसिकली रेज ड्रॉ करने को बोला.
The arrows, will they be pointing away or Yes. towards? Yes. Okay. You Hmm, make it look so easy. ये शॉर्ट साइटेडनेस आ रहा है हमारे पास, सॉरी, शो हाउ लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टेड। लॉन्ग साइटेडनेस के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। Hmm. तो वो वुड ड्रॉ इमेज बिहाइंड जाके बन रहा है, तो प्लेस a lens here which would converge the light at retina। तो जब ये इससे पास आउट करेगी तो कन्वर्ज होना है उसने, इट वुड कन्वर्ज, एंड देन इस पे करेगी तो फर्दर कन्वर्ज होगी, एंड द रे वुड मीट एट रेटिना। It लेट मी looks the same. ट्राई टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ लाइंस। पहले मैं लेंस ड्रॉ कर दूं। ये लेंस आ गया, फर्स्ट रे व्हेन इट टचेस द वो, उसने कन्वर्ज होना है यहाँ पे, एंड देन फर्दर कन्वर्ज होना है उसने, ड्यू टू दिस कन्वर्जिंग लेंस फर्दर कन्वर्ज होगी। जो स्ट्रेट है इट वुड गो स्ट्रेट, एंड जो ये रे है फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेट जाएगी, देन कन्वर्ज होगी, Oh, देन फर्दर कन्वर्ज होगी। okay. Then they have asked us to find out the potential difference across LED. Current they have given is 0.20, and we know in series the current remains same. So whereas the resistance of the fixed resistor is 60. So V is equals to IR का formula लगाएंगे, I is 0.20 times 60, 12. 0 point, सॉरी 0.020, 1.2 हो जाएगा फिर तो। ठीक है। टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज 4.5, और उसने एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 1.2 एंड बैटरी ईएमएफ इज 4.5, तो एलईडी की कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 4.5 माइनस 1.2 विद गिव अस 3.3. एक्सप्लेन व्हाई द एलईडी डज नॉट लाइट अप इफ द बैटरी इज रिवर्स्ड। बिकॉज एलईडी जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है Current फुल is फॉर्म, reversed. and when the direction of battery is reversed across the connections to the LED, it would not let the current to pass through it, तो वो current मतलब वो ग्लो नहीं करेगा उसमें बिल्कुल भी। Can we say that the current is reversed so it won't be suitable to the LED? बिकॉज वो डायोड है ना, डायोड ओनली कंडक्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। Okay. डायोड को मेंशन करना जरूरी है ना। Hmm. एंड देन उसने कहा शो दैट द फ्लैशलाइट ऑपरेट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। तो पावर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? V into I के, and flashlight operates for the chemical energy stored is 1050, so E is equals to VIT का फॉर्मूला लग जाएगा, एंड हमें टाइम फाइंड आउट करना है, सो टाइम वुड बी इक्वल्स टू E over VI. E over VI। E is 1050, I is 0.020, and Voltage. is 4.5.
Wasn't that the one across the LED? नहीं, टोटल सर्किट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी हम कर रहे हैं, तो बैटरी की वोल्टेज यूज करेंगे, विच वाज 4.5. Oh, it's not giving 3 hours. भाई ये सेकंड्स में आंसर आया, तो हम इसको 3600 से डिवाइड भी करेंगे इन ऑर्डर टू गो टू आवर्स. Oh, yeah. बेशक यहीं पे 3600 मल्टीप्लाई कर दो. Hmm. Calculate the total charge that flow through the LED in 3600 seconds. So Q is equals to I T के इक्वल होता है. एंड I की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0.02 hours to seconds is उसने टाइम हमें times ऑलरेडी दिया 3000. हुआ है, 3600. Oh, 72. देन हमें वेव्स को कंपेयर करना है यहाँ पे. ब्लूटूथ इज थ्रू द रेडियो वेव्स. थर्मल इमेजिंग हमारे पास किसकी होती है? Infrared. इंफ्रारेड की. स्टेरलाइजिंग के लिए हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट के लिए गामा रेज Yeah, यूज करते हैं, एंड फोटोग्राफी में विजिबल लाइट आ गई. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? कांस्टेंट three होती है times फॉर 10 ऑल power. 3 × 10⁸. Then we have to find the wavelength. For that, we have given the frequency. We have the speed. 3 times 10 power 8 So divided by lambda is equals to speed over frequency. फ्रीक्वेंसी हम एवरेज ले लेंगे तो वो 2.44 बन जाएगा. एंड स्पीड इज 3 × 10⁸ मेगा हर्ट्ज है तो 10⁹9. गीगा है तो 10⁹9 हो जाएगा. 0.12. Suggest why Bluetooth heads does not only works for short distance because wavelength is very Long. long, so it would not penetrate through the walls. So that's why short distance के लिए होता है, weaker हो जाएगा हमारे पास signal. Okay. देन उसने ये पूछा हुआ है 92. 92 हमारे पास क्या होता है? Atomic Atomic number, number. and 235 is atomic mass. Nucleon. State the process by which energy is released from uranium. वो nuclear fission होता है. Describe the Hmm. mass and energy change. हमने nuclear fission and fusions में पढ़ा हुआ है कि the energy, the mass would always be the less. And why is that? Because during the process, some part of the mass is converted into energy. That's why Hmm. जो है E is equals to mc square के accordingly nuclear fission और fusion के अंदर part of the mass is converted into energy. Wait, what is that question asking? ये पूछा describe the mass and energy change that takes place during the process in nuclear reactor. Oh, so like we would say that the mass decreases and energy Is convert a bit increases. of the part of the mass is converted into energy. Oh, नेक्स्ट में उसने बोला हुआ है डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है एनर्जी के चैप्टर के अंदर कि द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस heats up the water, converts it into steam, and that steam is used to run the turbines for turbine. electricity. Hmm. Advantage of nuclear fuels: a very large amount of energy is produced from a very small amount of fuel. And disadvantage: even the waste material is difficult Expensive. to dispose of. Can I say expensive? Expensive भी होता है यार. I memorized this answer. Okay. X is
Venus. वीनस एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज उसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से भी क्या है, स्मॉलर है। Yeah. एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, तो हमने वो डिस्कस किया हुआ, ग्रेटर द मास ग्रेटर वुड बी द Greater gravitational field field. strength. Explain why distance is taken in average, because we have studied that the orbital paths of the planets are elliptical, so that's why we Yeah. take an average values. And then we have to calculate the average orbital speed. Average orbital 2 speed is pi given r. as 2 pi r over t. R Mm. for Earth is 149.6 into 10 raised to power 9 divided by time, which is 365 times 24 times 60 times 60. See if we are getting 30 kilometers per second. No. Why? अच्छा, वो फिर आप यहाँ पे 10 Mm. रेज़ टू पावर 6 लिख दो, क्योंकि उसने किलोमीटर्स पर सेकंड में बोला हुआ ना, फिर 9 ना लिखो, 10 रेज़ टू पावर 6 कर दो यहाँ पे। Yeah, 30. I think this question came in my exam. Wait, no, I didn't. Then there is a theory, sorry, blank question. Protostars are formed from nubella, Nebula. planetary nubella, and a When protostar the outward becomes gravitational force is balanced by the आउटवर्ड inward ग्रेविटेशनल होती है pressure. या आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर होता है? Oh, Outward radiation radiation. pressure is balanced by inward gravitational force. Initial Mm. force for nuclear power station is Nuclear hydrogen. fusion. Oh. हाइड्रोजन पावर न्यूक्लियर रिएक्शन, Mhm. स्टार्स में हाइड्रोजन होता है हमारे पास. Stars that are approximately the same size as the sun becomes red giant with I know this. I when know this. Wait. Supernova. planetary nebula, white dwarf बन Oh, रहा है. सुपरनोवा तब होता हमारे पास अगर हमारे पास आगे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार हो रहा था, तो हमने सुपरनोवा yeah. लिखा.